एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेक्चर। Let's begin. So on page number 1 we have a very important article and this is relevant for your upcoming preliminary examination. Nobel for work on click chemistry and quantum mechanics. You know that science and tech is becoming very prominent in your UPSC ka exam, right? Especially in the prelims portion. And students who miss these kind of articles, they wonder, ma'am, from where the questions on science and tech have been asked, right, in this year's UPSC prelims ka exam. So for those students who are missing out on the science and tech current affairs and who are just understanding the static ones, in these lectures that I am providing, I'll be covering the science and tech current affairs as well. So make sure that you have your register intact. You can make notes register wise also. For example, you are making a register on science and tech, so only science and tech related information will be there, or you can make a separate register for current affairs and you can include all the current affairs from every subject in that particular register. That is your choice. Okay, so science and tech ke liye this is the article. Here we will understand click chemistry and quantum mechanics wala topic. So scientists Caroline R. Bertozzi and Morten Meldal and K. Barry Sharpless, they won the 2022 Nobel Prize in Chemistry. Chemistry में इन्होंने 2022 का Nobel Prize जीता है. For what? For discovering reactions that let molecules snap together to create desired compounds and that offer insight into cell biology. Those kind of molecules that stick together, right? To create a certain kind of compound. कोई compound बनाना है तो मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ एकदम स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फर्दर सेल एवोल्यूशन एंड सेल बायोलॉजी. सेल की बायोलॉजी और सेल एवोल्यूशन समझने में ये चीज हमारी हेल्प करेगी जिसके ऊपर इन्होंने डिस्कवरी की है. सो द थ्री हैव बीन अवॉर्डेड फॉर देयर वर्क इन क्लिक केमिस्ट्री. इन तीनों को ना क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर अपना जो इन्होंने काम किया है उसके बेसिस पे इनको दिया गया है नोबेल प्राइज. So they can ask you about click chemistry in prelims. What is click chemistry? Here the molecules snap together fast and firmly without the need for a long complicated process and too many unwanted byproducts and they result into a desired compound. कोई इसमें byproducts भी नहीं निकलते हैं ज्यादा, ये सीधा जो compound हमें चाहिए उसी को form कर देता है. Their work has application in the field of medical science. Now this is also important. Click chemistry, where is the usage of click chemistry? In medical science, including the treatment of cancer. कैंसर के ट्रीटमेंट में ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डिस्कवरी है, ये बहुत फायदेमंद होगी. सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन पेपर 3. ओके, सो व्हाट द साइंटिस्ट हैव वर्कड ऑन, इन्होंने किस चीज पे काम किया है. सो बैरी शार्पलेस एंड मोर्टेन मेल्डाल, दे हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन केमिस्ट्री. व्हाई? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. अब ये टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे ब्रॉड केमिस्ट्री इनटू द एरा ऑफ फंक्शनलिज्म एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री. क्योंकि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो स्थापित किया है, फंक्शनिंग फाउंडेशन. यानी कि क्लिक केमिस्ट्री को थ्योराइज नहीं किया है, सीधा प्रैक्टिकल इसका काम दिखाया है, राइट. They have established the practicality, right. They shared the prize with Caroline Bertozzi, who took click chemistry to a new dimension and began using it to map the cells. Now these two scientists worked on click chemistry and she used click chemistry to further the discovery by using it to map the cells. Her bioorthogonal reactions are now contributing to more targeted cancer treatments. अब इसका जो यूसेज है क्लिक केमिस्ट्री का, इसको एक वाइड रूप दिया है कैरोलाइन बर्टोजी ने. To simplify this, Sharpless came up with the term click chemistry. Sharpless जो थे वो इस term के साथ आए कि this is also a one possibility of the cells, click chemistry. He worked on it. Meldal, what did he do? He independently basically came up with a special chemical structure called triazole. तो ये आए हैं triazole के साथ, ये लेकर आए triazole को. He also worked independently and this triazole has many important applications and Bertozzi, she took it all the way more. Matlab she developed she developed that this kind of click reaction could work inside living organism also, which is known as bioorthogonal reaction. ये टर्म इन्होंने दिया है कैरोलाइन ने कि भाई ये जो क्लिक केमिस्ट्री है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में भी काम कर सकता है. इट कैन टेक प्लेस विद इन द लिविंग सिस्टम विदाउट इंटरफेयरिंग विद देयर बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट कुड हेल्प टू ट्रीट कैंसर, right.
So what is click chemistry? We have understood जहाँ पर the molecules they snap together, they do not entangle against each other, they result into a desired compound. Okay, now यहाँ पर next important article पे आते हैं. The next important article is 2 Ayurveda doctors booked under UAPA can deny any PFI link. So this ना PFI and UAPA have been in news since the last 1 week. पिछले एक हफ्ते से तो मैं ही इनको न्यूज में देख रही हूँ, ये UAPA और PFI. What is this? ठीक है, what is this entire issue all about? This is relevant for prelims and paper 3. Government of India has banned the Popular Front of India and its affiliates for 5 years under the Unlawful Activities Prevention Act 1967 for having terror links. तो एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2007 में क्रिएट हुई थी. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, Karnataka Forum for Dignity and Manitha Niti Pasarai in Tamil Nadu. These 3 organizations, Muslim organizations, were merged and Popular Front of India was created. Now they are saying that ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, इसको यूआपा के तहत बैन कर दिया गया है फॉर हैविंग टेरर लिंक्स. दैट वाज द न्यूज. नाउ दिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्ड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एज अनलॉफुल एसोसिएशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अनलॉफुली वर्किंग and this organization also has its associates like Rehab India Foundation, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights. These are the associate organization with PFI. So what was the reason which was given? This is basically एक तो term दे दिया गया unlawful association. What was the further reason why PFI was banned? So government said that some of the PFI's founding members are leaders of SIMI, and we have studied SIMI in our previous lectures also. SIMI is the Students Islamic Movement of India. तो ऐसा कहा जा रहा है कि PFI के जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, वो सिमी के कह सकते हैं ये टेरर आउटफिट्स हैं, इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं. एंड PFI हैज लिंक विद JMB also, Jamaatul Mujahideen, which is based in Bangladesh, right? Both are proscribed organization. What do you understand by the term proscribed? Proscribed means forbidden by law. This will help you a lot in increasing your vocabulary, enhancing your vocabulary. So please write it down. It means forbid, especially by law. मतलब एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको या कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया है, ठीक है, बैन किया गया है. There had been a number of cases of international linkages of PFI with global terrorist groups also based in Iraq and Syria. Okay, so that was the reason given by government for banning PFI. And the PFI was banned by Unlawful Activities Prevention Act. So what is it? Unlawful Activities Prevention Act basically is UAPA. Its short term is UAPA. It was created in 1967 and modified in 2004 and 2008. Okay, even in 2019 पार्लियामेंट क्लियर्ड दिस बिल. फाइनल जो अमेंडमेंट बिल था ना, इसको फाइनली अमेंड करके 2019 में इसका बिल पास किया गया था to designate individual as terrorist on certain grounds. There were certain grounds on which an individual can be termed as terrorist. Okay. Now basically terrorism crime से deal करने के लिए it deviates from ordinary legal procedures. मतलब the in certain cases where terrorist crimes have to be proved or dealt with, in that case UAPA is enacted. So there are certain important sections in UAPA that you need to understand and remember for prelims as well as paper 3. Section 7. Very important section. Section 7 basically gives the government the power. Government को ये power दी जाती है for what? To prohibit use of funds by unlawful association. आप किसी भी तरीके का फंड अगर unlawful association के द्वारा यूज कर रहे हो, that will be prohibited by government. Government के पास ये power है, ठीक है. After an organization is banned, for example in this case PFI is banned. So if organization is banned and center is satisfied after an inquiry that any person has custody of any money or any kind of security or credit which are being used or are intended to be used for the purpose of unlawful association, then central government can prohibit such person for paying or delivering this kind of amount. Okay, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने बैन कर दिया, स्टिल इससे रिलेटेड किसी बंदे के पास किसी तरीके की सिक्योरिटी, क्रेडिट या पैसा है जिसको वो अनलॉफुल काम के लिए यूज कर सकता है, तो इस केस में सेंटर प्रोहिबिट कर सकती है उस इंसान को. It also gives power to law enforcement agencies also. They can search any premise related to this kind of association. They can examine their books of account also. Then comes section 8 of this act. Section 8 gives power to the center to notify any place
which is in its opinion used for purpose of such unlawful association. They can notify it in their announcement कि this particular place is used for unlawful association. This place can be house also, building also, tent also, any kind of vessel also. सेक्शन 8 के तहत गवर्नमेंट या सेंटर यूआपा का यूज करके नोटिफाई कर देती है पब्लिक को एट लार्ज कि भाई ये प्लेस जो है ये अनलॉफुल एसोसिएशन के लिए यूज की जा रही है. And then there is section 10, 7, 8 and 10. These are the most important sections of this act. Section 10 criminalizes membership of a band or organization. You cannot become a member of that organization that is banned by under UAPA, or you cannot be a member. That would be punishable, imprisonment of 2 years, or it can be life imprisonment also. Okay. And UAPA also provides for a tribunal. So there is a UAPA tribunal also. UAPA का अपना tribunal भी होता है under High Court judge. It is provided and it is formed by the government for its bans to have long-term legal sanctity. For example, PFI has been banned. So to make sure that this ban is long-term, okay, and this ban is not breached, for that a tribunal is constituted under High Court judge. ये आपको पॉइंट याद रखना है. दे कैन कंफ्यूज यू इन प्रिलिम्स बाय राइटिंग सुप्रीम कोर्ट जज. दैट वुड बी रॉन्ग. इट इज हाई कोर्ट जज. ओके. तो 2019 में भी क्वेश्चन आया था यूआपा के ऊपर. सो नाउ दिस ईयर नो क्वेश्चन केम ऑन यूआपा. सो नेक्स्ट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बिकॉज रिसेंटली पीएफआई हैज बीन बैंड. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई अलर्ट टॉपिक दैट यू हैव टू प्रिपेयर. Coming on to the next important article, this is the editorial in the Hindu newspaper. Many students were requesting, ma'am, please cover the editorial also. So here is the most important editorial. Gubernatorial procrastination is unreasonable. So this is important for paper 2, Governor, Chief Minister. You have to study these chapters as well. So here the article says that a bill passed by State Assembly becomes law only after it is assented to by the governor. So this is basic prelims का fact है. Please write it down. बिल जो स्टेट असेंबली पास करती है वो तभी लॉ बनता है जब गवर्नर उसको अपनी असेंट या परमिशन देगा. एंड गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज कंप्लीट ओनली व्हेन ही साइंस, बिकॉज गवर्नर इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट असेंबली ना. स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है ना गवर्नर. तो भाई उसकी परमिशन तो जरूरी होगी तभी एक बिल लॉ बन पाएगा. एंड इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेम काइंड ऑफ प्रोविजन एग्जिस्ट. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना इस तरीके का प्रोविजन वहां भी है. Okay, so it may look a bit strange that lawmaking body does not have the final say in the process of lawmaking, and the bill it passes gets transformed into law only when governor assents. So this is the question mark here. The law is saying that the constitution is saying that bill will become a law by state assembly only if governor is permitting the bill, right? But what about the role of lawmaking body? Lawmaking body, if it is making a law, it would be good na. It would be for the welfare of people. Lawmaking body कुछ सोच समझ के ही तो कोई बिल बनाएगी ना. And still only governor has the permission to convert that bill into law. That is quite weird. So governor's assent becomes the most crucial act in the whole lawmaking process. पूरे lawmaking process में whatever you are doing, the end is that governor has to give its permission. But right now governor's assent has also become controversial in 2 states, Kerala and Tamil Nadu. So what is the case in Kerala and Tamil Nadu? In Tamil Nadu, governor forwarded the bill for exemption from the NEET exam to the president after considerable delay. काफी delay के बाद governor ने NEET exam का जो bill था, exemption का bill था, वो president के पास भेजा. And Kerala situation became a bit curious when the governor publicly announced that he would not give assent to the Lokayukt amendment bill and Kerala University amendment bill. So basically the entire lawmaking process then it gets converted into waste of time. भाई इतना टाइम इट गोज a lot of time goes into the formulation of a particular bill. बहुत सारी चीजें पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है. And then when the governor publicly announces that I'm not going to permit this bill, and or the governor after so much delay sends the bill to the president, right, for consideration, that amounts to wastage of a lot of time. जो कि आप सही चीजों के लिए लगा सकते थे. Such actions by governors throw the legislative programs of governments out of the gear because there is so much uncertainty, and then it also results into the delay in the welfare of the people. भाई लोगों के हित के लिए आप कोई बिल बना रहे हो और इतना टाइम उस पे वेस्ट हो रहा है उसको परमिशन देने के लिए, तो लोगों का हित तो पीछे जा रहा है ना. देखो नीट एग्जाम के लिए इट टुक सो मच टाइम, सो स्टूडेंट्स फ्यूचर इज आल्सो एट रिस्क. So the question of whether a governor is permitted by constitution to cause uncertainty in the matter of giving permission to the bill,
is of great importance कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि गवर्नर भाई इतना अनसर्टेनिटी कॉज करेगा. So here we study Article 200. Article 200 deals with the power of governor with regard to giving permission to the bills which are passed by the state legislature. It provides certain options for the governor. So Article 200 में ना there are 3 options which are provided to the governor. Okay, to exercise when a bill reaches him from the assembly. So first option is he may give assent. पहला तो option ये है ना कि भाई yes governor has assented, or he can send it back to the assembly, या फिर वो वापस भेज देगा. Second option, requesting the assembly to reconsider it. In this case, if assembly passes the bill without making any change and sends it back to the governor, he will have to give assent. मान लो assembly जो है बोलती है कि भाई कोई change की जरूरत नहीं है, पास करो इसको, तो governor को assent देना पड़ेगा. This provision is contained in Article 200, but it is contained in Article 200 very vaguely, unambiguously. It unambiguously affirms the primacy of legislature. But there is a third option also, that if governor does not want to give permission ना, he will send the bill for consideration to the president. मान लो गवर्नर नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, वो क्या बोलेगा, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूँ, वो कंसिडर करेंगे इस बिल को, राइट. So the provision concerned makes it very clear that a bill can be reserved for the consideration of the president only if governor forms an opinion that bill would endanger the position. So governor भी तभी भेजेगा president को जब उसको लगेगा कि ये जो बिल है ये किसी तरीके का डेंजर पोज कर रहा है, तो इसमें सीरियस कंसिडरेशन की जरूरत है. सो देयर इज अ फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज परमिशन. गवर्नर क्या कर सकता है, फोर्थ ऑप्शन ये है कि भाई ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है. गवर्नर इज नाइदर सेइंग यस नॉर सेइंग नो. But it is not normally done by any governor because it would be very extremely unpopular action. People will turn against governor. तो ये तो जानबूझ के डिले कॉज कर रहा है गवर्नर, ऐसा बोल के गवर्नर के अगेंस्ट हो जाएंगे लोग, राइट. So what lesson can we learn from these practices? Refusal of assent is a practice which is not followed in other democratic countries. This is a point to be noted for prelims also. कि भाई किसी भी परमिशन को आप देने से मना कर रहे हो, वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती है. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सम कॉन्टेक्स्ट. ओके, Indian constitution does not provide any such remedy. The courts too have more or less accepted the position that if governor withholds assent of the bill, right, the bill will go. Thus the whole legislative exercise will be useless. But इसके लिए ना कोई पेनल्टी या कोई रेमेडी नहीं है इस ऑप्शन के लिए अगर वो मना कर देता है गवर्नर. ठीक है, इवन हमारे कोर्ट भी बोलते हैं कि फिर तो भैया पूरा जो आपने एक्सरसाइज लॉ मेकिंग प्रोसेस में लगाई वो सब वेस्ट गई. But this is not good na for a evolving for a very progressive democratic nation. This kind of practice is not good. So there is a legitimate question over here whether the government of a state can challenge the refusal of assent by governor in a court of law. क्या स्टेट इस बेस पे चैलेंज कर सकती है गवर्नर के रिफ्यूजल को कि भाई हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, right, our whole time has been wasted because the governor has is refusing to give its permission. That is a legitimate question. Then there is Article 361 also. Article 361 prohibits the court from initiating proceedings against a governor. तो इवन गवर्नर इज प्रोटेक्टेड. गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ आप जो भी वो काम करते हैं अपने पावर्स के विद इन रहकर, आप उनके खिलाफ कोई कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते. सो दे आर एंजॉयिंग इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स. Now there is a very important Supreme Court ka case study that you need to understand for paper 2. You can also write it down because this year there were 4 to 5 questions based on Supreme Court case studies. Rameshwar Prasad and ORS versus Union of India and ANR. The court held that the immunity given by Article 361 does not take away the power of the court to examine the validity. This was a very important and wonderful verdict of court. कोर्ट ने बोला कि भाई भले ही इम्यूनिटी दी आर्टिकल 361 के तहत कि आप गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ उनके किए हुए एक्शंस के लिए कोई केस नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट उनके एक्शन को एग्जामिन नहीं कर सकती. कोर्ट कैन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ देयर एक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड्स. Okay, so this is a wonderful case which is relevant for this particular topic. Please write it down. Now comes the next important article. Oil rises as OPEC plus agrees to deep cuts. तो ये हैं those countries in the map. Please take a print out of this. The PDF is uploaded on a Telegram channel. इसका print निकाल लेना. This map is very important for prelims. So oil rose about 1%. OPEC plus members, they have agreed to its deepest cuts to output.
since 2020 COVID pandemic, despite a tight market in opposition to cuts from United States and other nations. So what is OPEC? OPEC जो है वो एक permanent intergovernmental organization है which was created in 1960 and it was created by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसको लॉन्च किया गया था. द एम इज सिंपल, यहाँ पर ऑयल के बारे में पढ़ रहे हो ना, एम इज वेरी सिंपल, टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट. ऑयल की सप्लाई को ऐसे मैनेज करना कि वर्ल्ड मार्केट में उसका प्राइस एक सेट किया जा सके. एंड दिस मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री that is a substantial exporter of oil. वो कंट्री जो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करता है, वो इस OPEC की मेंबरशिप ले सकता है. टोटल देयर आर राइट नाउ 14 मेंबर कंट्रीज. ओके, तो आपको ये 14 मेंबर कंट्रीज थोड़ी याद रखनी होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर. विद इन 20 मिनट्स वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यू रियली एंजॉयड इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल.